So good people, bad managers. How work culture corrupts good intentions. You can mute Ananda. Written by Samuel Culbert. See what a name. Yeah, we all are good people with good intentions. Yeah, but when we are part of the corporate culture, पता नहीं क्या होता है. The culture itself is so faulty in design that we have to focus on our growth instead of everybody's growth. Uh, if what is the common thing between Sunil Gavaskar, Sachin Tendulkar, and Virat Kohli? Okay, what is the common thing between Sunil Gavaskar, Sachin Tendulkar, and Virat Kohli? Of course, the obvious answer is they are great batsmen. Okay, apart from that, if you have noticed that all the three were amazing performers in batting, and therefore, because they scored more and more runs, they were made the captain of the Indian team, and they all three failed miserably as the captain of Indian team. Yeah, those who are too young, they don't know that about Sunil Gavaskar. So he's a veteran batsman who preceded Sachin Tendulkar. So you know this, right? Have you ever thought ऐसा क्यों हुआ? Is this a coincidence that all the three turned out to be failed captain, but continued to be very good batsmen or cricketers? And that's the problem happening everywhere in the corporate world. If a person is great in one skill, okay, like batting, he's performing more and more runs, and he's given a role of a leader. Now, the skill set required for a leader are completely different from the skill set required to hit the ball outside the stadium. So what we commit a mistake in corporate world is if a person is good at sales and he's bringing in lots and lots of businesses and achieving targets, surpassing the monthly targets in sales, and then we promote him to become the sales manager, and now suddenly instead of selling, he has to take care of other salesmen under him, and he has no clue what to do. So every promotion is not a welcome sign. Leadership requires a completely different skill set. It's about not producing results, but taking care of the people who produce results. That's the role of the leader. Leader is not responsible for the results. The leader is responsible for the people who produce results. All right? It's like parenting. जब माँ बाप को बच्चों का होमवर्क नहीं करवाना है, माँ बाप को सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम रहना है कि भाई तू जब गिर जाएगा, जब गलती करेगा, फिर हम हैं. लोग क्या करते हैं, उसको गलती करने का मौका ही नहीं देते. वो प्रॉब्लम है. राइट? लीडरशिप एंड पेरेंटिंग इज ऑलमोस्ट सेम. सिर्फ पेरेंटिंग में छोटे बच्चे रहते हैं और लीडरशिप में बड़े बच्चे रहते हैं कॉर्पोरेट्स में. सो an amazing thought I learned from Maulana Waiduddin Khan. He just passed away last year. Very renowned name. Uh, and he was traveling in a car, in a cab, taxi cab. And he's always in a learning mode. He always used to say that we have to learn from everybody, everywhere. So he started talking with the driver, the taxi driver. And he asked us, how many years are you driving taxi? He said, साहब 25 साल हो गए. No, very good. So कितनी बार एक्सीडेंट हुआ है तुम्हारा? बोला साहब एक बार भी नहीं हुआ. अरे वाह, क्या बात है. तो व्हाट कैन बी द रीजन व्हाई? ऐसा क्यों कि एक बार भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, 25 साल आप टैक्सी चला रहे हो? एंड द आंसर द टैक्सी ड्राइवर गेव was such a profound answer, which every leader, every parent should learn from a taxi driver. And he said that driving is all about
taking care of other people's mistakes. ड्राइविंग मतलब दूसरों की गलतियों को संभाल लेना. नाउ सडनली व्हेन आई रेड दिस, जब मैं इरिटेट होता हूँ ड्राइविंग करते तो कोई ऐसा अचानक से कट मारता है, बिना सिग्नल टर्न लेता है ना, इंडिकेटर नहीं दिखाता है, रैश ड्राइविंग करता है, अननेसेसरली ओवरटेक करके मुझे थोड़ा डरा के चले जाते हैं ना बाइक, मोटर बाइक वाले. Now suddenly that irritation went away because now objective is to take care of other people's mistakes. When I say this, I assume that people will make mistakes और मैं उन सबका बाप हूँ. आई एम देयर पेरेंट. और जैसे माँ बाप अपने बच्चों की गलतियों को संभाल लेते हैं ना, नहीं बच्चा है ये तो पागल ही है, संभाल लेंगे, और हम नहीं संभालेंगे तो और कौन संभालेगा, राइट? व्हाट अ ग्रेट थॉट, राइट? आई मीन द होल अप्रोच हैज चेंज्ड नाउ. नाउ ऑफ कोर्स you will not be surprised that you don't have to restrict this only to driving. You can use it everywhere. Trust me, मेरा गुस्सा कम हो गया है तब से. वैसे भी मैं आई एम नॉट अ शॉर्ट टेम्पर्ड गाय. जितना भी जो भी अंदर किसी को मन ही मन में चिढ़ता था वो भी खत्म हो गया. एज इफ आई एम द लीडर ऑफ एवरीबडी. तुम गलती करो, मैं संभाल लूंगा, और मैं हूँ तुमको संभालने के लिए. एंड एवरीथिंग सीम्स सो नाइस एंड ब्यूटीफुल नाउ. So try it out. I think this is the biggest lesson if you could take away from today's session. Yeah. फिर वो सामने आपका पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, आपका बॉस हो. Yeah, you are supposed to take care of your boss mistakes. If boss throws tantrums at you in front of everybody, मनी बोलो कि हाँ वो उसको थोड़ा ढीला, पेज ढीला है, आई हैव टू टेक केयर ऑफ हिम, वो सुधर जाएगा एक दिन. बट राइट नाउ मुझे आई डोंट हैव टू गिव अ हीड to his short temperedness. Very interesting, right? So the primary objective or the primary role of a leader is to create an environment where employees feel safe to make mistakes. I repeat, the primary role of a leader is to create an environment where his employees feel safe. Safe is the keyword, to make mistakes. Okay, everybody is writing down, so I'll take a pause. What do I mean by this? That does not mean that we have to encourage to commit mistakes. Nah, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. Mistakes are bad. Mistakes is detrimental to the business. I understand. I'm talking about creating an environment where they don't fear of making mistakes. मन ही मन जो हमेशा डर रहता है कि अरे मुझसे ये अगर हो गया ना, एक्सेल शीट में अगर गड़बड़ होगी तो बॉस में डांटेगा, वो फियर मन में रख के जब काम करते हैं ना हम, दैट hampers our productivity to a 4th grade child and we make more mistakes. तो फ्री रहेगा ना माइंड, एकदम बिंदास. वो कब होगा? जब बॉस बोलेगा अरे करना तू, मैं हूं ना, तेरे को जो करना है कर, पावर पॉइंट का कैसा भी बना तू, आई एम नॉट गोइंग टू जज यू, देन विल डिस्कस ऑन इट. बस तू एक वाहियात फालतू का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना, देन विल डिस्कस. ओके, नथिंग इज फाइनल, राइट? तो सी ऐसा अगर कोई बॉस बोलेगा तो कितना अच्छा, यू बिंदास, यू विल टेक रिस्क्स, यू विल टेक रिस्क्स. दैट इज द मेन थिंग, बिकॉज नाउ यू डोंट फियर ऑफ कमिटिंग मिस्टेक. आई ऑलवेज गिव दिस एग्जांपल ऑफ अ चाइल्ड. तकरीबन कितना 4-5 महीने के बाद एक बच्चा चलने का कोशिश करना शुरू करता है, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी 6 months. पहले क्रॉलिंग शुरू करता है, फिर पहली बार जब वो खड़ा रहने की कोशिश करता है और गिर जाता है, राइट, अगेन स्टैंड्स अप and tries to walk for the first time, and his mom or dad is sitting a little away from him or her. And how did look at the reaction of that parents? Yeah, I love to see that reaction. अरे वाह 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 बेटा, आजा आजा आजा, अरे इट्स ओके, गिर तो गिर, नो प्रॉब्लम, वापस उठो, मैं यहाँ पे हूँ, आओ मुझे आके ताली दो ना. बड़ा वंडरफुल साइट, and it's so pure and divine. And for the first time a child is trying to walk, and the way parents are encouraging him, right? He falls 10 times, still parents say, it's okay, chalta hai, come on, get up, and there is a smile, clapping all over, right? Of course you must have seen, right? Even if you don't have kids, you must have seen in movies, in your neighborhood, in your relatives.
अभी प्रॉब्लम कहाँ होता है, जब वो 6 महीने का बच्चा जब पढ़ा होता है और वो सेकंड स्टैंडर्ड में जाता है, थर्ड स्टैंडर्ड में जाता है, और तब वो जब गलती करते हैं कि जब टू का टेबल पहली बार वो सीखता है और 2 टाइम्स 2 4 की जगह 5 बोलता है, तब पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होता है? अरे पागल, तुझे इतना बार पता नहीं है 2 टाइम्स 2 4 होता है? ये सिखाते हैं स्कूल में? इतना भी तुझे याद नहीं कर सकते? कितना सिंपल है। सी हाउ there is a change in the approach towards making mistakes. When the child tried to walk for the first time, he fell down. We not even looked at it as a mistake. Forget about treating it as failure. We did not even consider it as a mistake. Are you getting my point? और वही जब वो बड़ा होकर गलतियां करता है, suddenly our approach changes. Now let's go back to the same scenario where the child tries to learn to walk for the first time and change the reaction of the parents. इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव रिएक्शन वो बोलता है, अरे पागल, तेरे को अक्ल नहीं, तू गिर जाता है, चलना नहीं आता तुझे, पता नहीं कि यू हैव टू ट्रांसफर योर वेट फ्रॉम लेफ्ट लेग टू राइट लेग, तभी सीखे तभी चलना था। रोज हमको देखता नहीं है तू चलते वक्त? अंधा है क्या तू? अगर ऐसे आई थिंक दिस सीन इटसेल्फ मेक्स अस laugh and it's horrifying for the child, right? It's just terrifying. वो बच्चा उठेगा ही नहीं वापस, वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाएगा मेंटली, although his legs are strong, right? So see how our feedback reaction as a leader, as a parent is so important, right? So see, there are mistakes. When I say that you should create an environment where they feel safe to make mistakes, there are 2 types of mistakes. What I've learned. Now, this I haven't read, but indirectly I have created this self-knowledge. One first type of mistake, which is quite common, is a mistake of method, mistake of technique. कि जहाँ पे एक्सेल शीट में कुछ गड़बड़ हुई, पावर पॉइंट में गलत कलर यूज किया, एक पावर पॉइंट स्लाइड पे लोगो डालना भूल गए, दीज आर मिस्टेक्स ऑफ टेक्निक एंड दीज आर ओके। यहाँ पे आपको डांटना नहीं है, यू हैव टू जस्ट गिव देम प्रॉपर फीडबैक। somebody is predicting my talk, okay? Good, good. So and second type is mistake of character. The first type में जो mistake of technique है, we say that Sachin is the god of cricket, star cricketer, star batsman. तो कभी वो 0 पे आउट होता था, तो हम थोड़ी बोलते हैं कभी कि ये सचिन तू झूठा है, नहीं ना? Why? Because it's a mistake of technique, and you always forgive mistakes of technique. They are honest mistakes. They are not intentional mistakes. Second type of mistake is called mistake of character, which is actually not a mistake. It's a deceit. It's cheating, झूठ बोलना, राइट? अभी प्राइमा फेसी कभी कभी लगता है ये कुछ सीरियस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा दोस्त है मेरा जो कभी टाइम पे नहीं आता है, कुछ भी हो, पिकनिक हो, पार्टी हो, मीटिंग हो, मूवी पे जाना है, वो 7 बोलेगा तो बाय डिफॉल्ट वो 7:30 बजे आएगा, राइट? एंड नाउ ऑल ऑफ अस डोंट ट्रस्ट हिम, एंड when I asked my friends why you don't trust him, nobody have the answer. कि पता नहीं रे, but I don't know, he's not reliable. उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है अच्छी। नाउ यू अंडरस्टैंड कि छोटी छोटी चीजें, अभी लेट पहुंचना कोई बड़ा पाप नहीं है, राइट? पर इफ यू कीप डूइंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, योर क्रेडिबिलिटी इंडेक्स गोज डाउन एंड पीपल स्टॉप ट्रस्टिंग यू। तो पहले आता है रिलायबिलिटी। Once you find that the person is not reliable, then he's not credible. And once he's not credible, there is loss of trust. Got it? Uh, and so mistake of character का और कुछ example, for example, I'm just talking to Sumit. He has come to Booklet house और कोई बुक का नाम लेता है वो, एंड अमृत तुमने ये बुक पढ़ी है क्या? से फॉर एग्जाम्पल थिंक लाइक अ मॉन्क। और एक्चुअली मैंने बुक पढ़ी नहीं है,
बट नाउ टू प्रोटेक्ट माई इमेज, बुकलेट गाय, सामने फैन बैठा है, तो मैं आई प्रिटेंड कि हाँ हाँ मैंने पढ़ी है बुक, झूठ बोलता हूँ मैं. दैट्स अ मिस्टेक ऑफ कैरेक्टर. इट डजंट मैटर वेदर द अदर पर्सन स्पॉट्स माई लाई और नॉट, इज उसका कुछ देना देना नहीं है. वो कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि समवेयर he might ask question about on that book, and if I'm not able to answer it, or I just wander around the bush, he will come to know, अरे उस दिन तो बोला था इसने बुक पढ़ी है, पर इसकी बातों से तो लग नहीं रहा है. ऐसे छोटे 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 स्मॉल रॉन्ग डूइंग्स, I can't even label it as dishonesty. Small wrongdoings, and you lose your character, and people stop following you. People stop trusting you, and there is a leadership failure. 99% of leadership failures are character failures, not technical failures. मेहनत कम की इसलिए फेल हुए नहीं, होशियार नहीं थे इसलिए फेल हुए नहीं. कैरेक्टर फेलियर्स. यू टेक एनी, बिल क्लिंटन, विजय माल्या, हर्षद मेहता, नीरव मोदी, सुब्रत रॉय, the list is endless. Yeah? Character failure is the major reason for leadership failures. एंड जहाँ पे प्रेडिक्शन गलत हो गया, यू नो अभी 2008 में जो मार्केट क्रैश हुआ बिकॉज ऑफ सब प्राइम, किसी सीईओ को निकाला नहीं था, बिकॉज मार्केट क्रैश हुआ ना. ठीक है, सेल्स नहीं हुआ, कोविड में कोई बड़े बड़े पोस्ट पे किसी को निकाला नहीं, बिकॉज वी नो दिस इज अ मिस्टेक ऑफ टेक्निक. सर्कमस्टेंसेस ऐसे है तो चलेगा, बट कहीं पे अगर कुछ नो बैंक ट्रांजैक्शन में फ्रॉड मिला तो तुरंत उसकी बदनामी होती है, एंड देन दैट लॉस्ट प्रेस्टीज विल नेवर कम बैक. नाउ सी इन द इंडस्ट्रियल एज, कार्ल मैक्स ने ये जो ये लाया था philosophy that maximizing shareholders return is a primary objective of a business, and everybody believed. But now things have changed. In the knowledge workers age, shareholder is not the main person now. आपको लगेगा कस्टमर, कस्टमर भी नहीं है. Now the main person is the employee. उसको खुश रखना है, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करना है, make him happy, take care of him as like a parent, and in turn he will make customers happy. वो टॉप मैनेजमेंट का काम नहीं है टू मेक कस्टमर्स हैप्पी. ये अप्रोच चेंज करो और एंड सी द रिजल्ट्स, राइट. देन इनफैक्ट देखो ना, व्हाट इज गुड फॉर द शेयर होल्डर इज एसेंशियली बैड फॉर द कस्टमर. बोथ कांट हैपन एट द सेम टाइम ना, बिकॉज द बिजनेस रिटर्न्स विल इंक्रीज when you increase your profit margins in your sales, which is bad for the customer. Or if you quality kam karoge to cut down the cost, is good for the shareholder because it will increase the returns, but bad for the customer. तो दोनों नहीं जा रहा है साथ में, right? So neither customer nor shareholder, you have to focus on the employees. They are your family. उनके साथ सब कुछ grow करो, and everything else will be taken care of. Shareholders will get good returns, customers will be happy and satisfied. और इसमें ना unnecessarily ना हम we have lost our common sense and our pride in our own civilization because of Western influence. This Western philosophy subscribes to individual growth, individualism, individual liberalization, है ना, अमेरिकन्स बोलते हैं. और वहां पे वैसा ही है, घर पे कोई एक से दूसरे से बात ही नहीं करता है. फॉरगेट अबाउट टॉकिंग टू नेबर्स, इट्स ऑल इंडिविजुअल, अकेले रहते हैं सब लोग. हमारा ऐसा नहीं है. आवर कल्चर इज कम्प्लीटली डिफरेंट. वी नेवर सब्सक्राइब टू इंडिविजुअलिज्म. वी ऑलवेज बिलीव्ड इन interdependence and not independence. We are all dependent on each other. I am dependent on you. You are dependent on me for this talk. I am dependent on the grocery shopkeeper for black pepper and coriander and dalchini and all. Right? But we focus on more on individual growth.
वी barely टॉक अबाउट ग्रुप ग्रोथ. कभी सुना भी नहीं है टर्म ग्रुप ग्रोथ. बोलने को भी मुश्किल हो रहा है. व्हाट इज ग्रुप ग्रोथ? आई लर्न दिस बिग टाइम. हो रहा था क्या? सो आई एम मेंटरिंग अ पर्सन टू रन अ जिम. ही हैज हिज ओन जिम. और 6 की बैच रहती है, सो इट्स अ ग्रुप वर्कआउट. कोई 6 बजे नहीं आता था. सब 6:10, 6:15, 6:20. एंड देयर इज एंटायर केओस. फिर उसको वापस उसका वार्म अप लो. एंड इंस्ट्रक्टर हैज टू नो इग्नोर द पीपल हु हैव कम ऑन टाइम. उनको गुस्सा आता है, फिर हम टाइम पे क्यों आए, वो कल से वो भी लेट आते हैं. तो बैच 6 बजे कभी शुरू ही नहीं होती थी. बस वो इंस्ट्रक्टर अकेला 6 बजे होता था. सो वी केम आउट विद एन आइडिया कि पनिशमेंट, जो लेट आएगा उसको पनिशमेंट मिलेगा. एंड इट वॉज अ मिजरेबल आइडिया. पीपल स्टार्टेड टेकिंग इट नो पर्सनली. हमने फी भरा है, व्हाट नॉट वगैरह. हाउ कैन यू पनिश मी वगैरह. देन वी चेंज दैट आइडिया. पनिशमेंट ही रखा. बट अगर एक लेट आता है तो पूरे ग्रुप को पनिशमेंट मिलेगा. 108 सूर्य नमस्कार. नॉट जस्ट 10-10, 12 आसन के सूर्य नमस्कार. अगर एक लेट आया तो 10-12 लोग हैं हम, तो 12, सब 12 के 12 को पनिशमेंट. एंड इट डिड वंडर्स. बिकॉज नाउ मेरी वजह से मुझे तकलीफ हुई, ठीक है, मेरा नुकसान हुआ, ठीक है. मेरी वजह से किसी दूसरे का नुकसान हो रहा है, ना 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 ना, ये ना चल बे. ये हमारे इट्स सो नेचुरल टू अस कि मेरी वजह से किसी दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए. एंड लिटरली 5:30 बजे सुबह लोग एक दूसरे को फोन करने लगे, ए भाई उठा ना, तू टाइम पे आना है. बोथ टू एनकरेज हिम, एंड वो लेट आएगा तो मेरी वाट लगेगी, मुझे भी 108 सूर्य नमस्कार करना पड़ेगा. सो आई थिंक इट वर्क परफेक्टली. तो सी हाउ ग्रुप ग्रोथ की बात जो कर रहा हूँ, हमारे अंदर है जहन में कि हम सबका भला हो. So instead of focusing on me, why not focus and treat the entire group as one unit? Vasudhaiva Kutumbakam is part of our civilization. It's part of our Vedant philosophy. वो ऐसे ही लिखा नहीं है, द वर्ल्ड इज माई फैमिली. चलो वर्ल्ड नहीं, एटलीस्ट आपका ऑफिस का ग्रुप तो कंसिडर करो एक यूनिट. वर्ल्ड तो बहुत बड़ी बात हो गई, राइट? एंड सो व्हेन आई वाज एक्सरसाइजिंग इन द ग्रुप, नाउ आई अंडरस्टूड द पावर ऑफ ग्रुप. कि अकेले एक्सरसाइज करूंगा तो द मोटिवेशन डजंट लास्ट फॉर मोर देन 1 मंथ. एंड आई एम नॉट एट ऑल अ सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन. आपको यकीन नहीं होगा, आपको लगेगा अरे ये तो इतना हेल्दी ईटिंग करता है, इतना एक्सरसाइज करता है, रीडिंग करता है. ट्रस्ट मी, आई एम नॉट एट ऑल अ सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन. बट वंस आई एक्सेप्टेड दिस वीकनेस ऑफ माइंड, देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस. देन आई रियलाइज दैट हाँ, अगर कोई मेरे साथ में रहेगा ना, तो आई एक्सरसाइज रेगुलरली. चलो मेरे लेवल का नहीं रहेगा तो भी चलेगा, कोई भी आंडू पांडू चाहिए साथ में. वो बिगिनर रहेगा तो भी चलेगा, लड़का लड़की कोई भी रहेगा चलेगा. इफ देयर इज अ ग्रुप, नो, देन वी ऑल, आई डोंट नो, देयर इज सम मैजिक इन इट दैट मेरा देख के वो करता है, उसका देख के मैं करता है, राइट? नाउ दे स्टार्टेड एनालाइजिंग माय थॉट्स while exercising together, that even though we are working in group, secretly I was competing with others. कि अगर 20 पुशअप्स मारने हैं तो मैं सबसे पहले कैसे करूं 20 पुशअप्स, सामने वाले से ज्यादा कैसे करूं. या 1 मिनट में अगर मैक्सिमम पुशअप्स मारने तो मैं पहला कैसे आऊं सबसे, एंड इम्प्रेस द अदर्स. सीक्रेटली एवरीबडी वाज डूइंग दिस. एंड जाहिर है, जो बहुत दिनों से एक्सरसाइज कर रहे हो वो अच्छा करेंगे, जो बिगिनर से दे आर लेफ्ट फार बिहाइंड, राइट? एंड देन वी यूज्ड टू फील, मुझे अंदर ही अंदर मुझे खुशी मिलती थी, अरे आज मैंने सबसे ज्यादा पुलअप्स मारे. Yeah, I'm good at pulling. Others are good at pushing. Somebody is good at pushing. Somebody is good at lower body exercise. So I'm good at pulling pull-ups. But then I realized कि the the growth is all scattered. किसी का बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, किसी का हो ही नहीं रहा है. That was troubling me. कि नहीं, ये बात गलत है. ग्रुप में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ग्रोथ भी सबका सेम, एटलीस्ट इन सेम प्रपोर्शन होना चाहिए ना, राइट? एंड देन व्हेन आई रियलाइज्ड ग्रुप ग्रोथ, कि सबको, ये मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, हम सब एक यूनिट है और एक्सरसाइज कर रहे हैं. मैं सडनली माय अप्रोच चेंज. नाउ आई एम नॉट फोकसिंग ऑन मी, आई एम फोकसिंग ऑन अदर्स. चलो और 2 पुशअप मारते हैं, और 2 पुशअप मारते हैं, उस चक्कर में मेरा भी ज्यादा होने लगा. तो ऐसा नहीं है कि इफ आई शिफ्ट माय फोकस ऑन अदर्स दे विल ग्रो मोर देन मी. नो, इम्पॉसिबल.
I will definitely grow. And that's why, you know what? You take any army, not just Indian army, any defense force, be it America or koi bhi, that's the only place where you will see maximum brotherhood or sisterhood. I know there is no such word called sisterhood. I wish there was. ऐसा क्यों है कि आर्मी में सबसे ज्यादा भाईचारा दिखता है? You know why? क्योंकि मोर देन द टेक्निकल ट्रेनिंग, हॉर्स राइडिंग, शूटिंग एंड स्विमिंग एंड रनिंग, इससे ज्यादा सबसे ज्यादा ट्रेनिंग उनको क्या दी जाती है मालूम है? कि व्हेन यू आर ऑन टू वॉर, इन अ कॉम्बैट, योर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू सेव द ब्रदर ऑन योर लेफ्ट and save the brother on your right. That's the main reason you can win a war. जंग, दे हम बोलते ना, मैं देश को मरने के लिए भी रेडी हूं, नहीं, देश के लिए मरना नहीं है, जिंदा रहना है। जंग में जाके जिंदा जब लौट आओगे तो आप जंग जीतोगे ना, मरोगे तो जंग हार गए ना। तो ये जो डायलॉग मारते हैं ना, मैं देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हूं, मरने को कौन बोल रहा है? मरोगे तो नुकसान है देश का। एंड सो उनमें भाईचारा इतना होता है बिकॉज what is the stake? Your life is at stake. So you have to trust the person on the left and the person on the right. You get my point? तो अगर ये ट्रेनिंग अगर कॉर्पोरेट्स में आएंगे तो इंशाल्लाह क्या क्या होगा ना, आई हैव टू टेक केयर ऑफ द पर्सन सिटिंग इन माय लेफ्ट क्यूबिकल एंड आई हैव टू टेक केयर ऑफ द पर्सन सिटिंग ऑन माय राइट क्यूबिकल। ये माइंडसेट अगर डालेंगे तो आई थिंक द ऑर्गेनाइजेशन विल थ्राइव, एम्प्लॉयज विल बी हैप्पी, नो, कस्टमर्स विल बी हैप्पी, सेल्स ग्रोथ सब होगा। सेल्स टारगेट ये वो करने की जरूरत ही नहीं है। नो गॉसिपिंग, नो पॉलिटिक्स, नो कॉम्पिटिशन, इट्स ऑल ब्रदरहुड। देयर इज नेवर कॉम्पिटिशन इन आर्मी। अब देखोगे ना, बहुत डीप, आई बीन विथ आर्मी, मुझे बुलाते हैं ना टॉक के लिए, उसके जैसा ब्रदरहुड मुझे कहीं नहीं दिखा है। एक दूसरे के लिए जान देने को रेडी रहते हैं वो। सो आई विश कि ये कल्चर अगर कॉर्पोरेट में आए। सो ग्रुप ग्रोथ का जो मैंने बोला, आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ 108 सूर्य नमस्कार विच इज अ नेगेटिव इंसेंटिव, नेगेटिव ग्रुप इंसेंटिव। तो उसको पॉजिटिव इंसेंटिव तो और भी अच्छा ना, राइट? अगर नेगेटिव इज इट क्रिएट्स अ फियर, पॉजिटिव इंसेंटिव इज रिवॉर्डिंग। तो पूरे ग्रुप को, इंडिविजुअल ग्रोथ को नहीं फोकस करना है। अगर ये 10 लोगों की टीम, आप सबने मिलकर ये प्रोजेक्ट अगर खत्म किया और टाइम पे डिलीवर किया तो पूरे ग्रुप को बोनस मिलेगा, यार वॉट एवर द रिवॉर्ड इज, नॉट इंडिविजुअल, ग्रुप। फिर सडनली बिहेवियर विल चेंज। एक दूसरे को जल्दी, अरे आज जल्दी है ना ऑफिस में, हम ये काम खत्म करेंगे, राइट? सो लेट्स डू अवे विथ आवर ईगो, इंडिविजुअलिज्म and focus on the group. Yeah, we are made for social connections. Isolation के लिए बने नहीं है हम। आप बोलोगे मैं इंट्रोवर्ट हूँ, कुछ भी हो, that is one part. Expressing yourself is one part of your personality. We all need people. So don't do anything in isolation. All right. In fact, आपको पता है बुकलेट जो शुरुआत की थी मैंने, वो मेरे लिए की थी। If I make myself accountable to you guys, that every week I'll give a summary of a best-selling book. अभी मुझे पढ़ना ही है ना, because I made a commitment. So I used you guys for my benefit. आपको लग रहा है मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ? Of course, अभी दोनों का भला हो रहा है, right? I am growing, you are growing, everybody is growing. पर वही बाकी के रीडर्स क्या करते हैं, मेरे तो सब सब नोट्स उसके पास ही रखेंगे, सब बुक उनके पास शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, उनकी ग्रोथ हो सकती है, बट अगेन वो लिमिटेड ग्रोथ है ना। अगर मैं ग्रो होते होते अगर आपकी भी ग्रोथ हो रही है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि दिस इज एन अंडरलाइंग एजम्पशन इन आवर डीएनए दैट योर गेन हैज टू बी माय लॉस। ये एक डिफॉल्ट इक्वेशन हमारे मन में रहता है। इफ योर गेन माइट बी माय नो गेन नो लॉस, बट मोस्ट ऑफ द टाइम योर गेन कैन बी माय गेन ऑल्सो। ये दिमाग में आता ही नहीं है। योर प्रॉफिट हैज टू बी माय लॉस।
is the first assumption that comes to our mind. I'll give you a simple example. I was flying to Chennai and I was sitting in the aisle seat, and there were three gentlemen sitting in the next row. Okay. The flight was about to land. The air hostess, do आते हैं सबको बताने को कि fasten your seat belt, you're about to land, close your tray table. So the gentleman in the next row in the window seat was fast asleep, and the air hostess was shouting, "Sir, please close the tray table. We are about to land." But he was so asleep, fast asleep, he was not able to hear. Okay. Now the person sitting next to him in the middle seat, you know what he did? He woke him up. Up. See, air hostess was not able to reach out because it was a window seat, and she is standing at the aisle. The middle seat wala guy, he poked him कि उठो, वो बोल रही है ट्रे टेबल बंद करो. Just try to visualize this scenario. I was watching everything from behind. Now वो मिडिल सीट पे जो बैठने वाला आदमी है उसको बस 1 फुट हाथ सीधा करना था और ट्रे टेबल को बंद करना था उसका. He did not do that. Why? The underlying assumption, other person's फायदा मतलब मेरा नुकसान. अभी इसमें क्या नुकसान है उसका? ऑल द मोर कि वो सो रहा है और मैं उसकी हेल्प करूं, उसको पता भी ना चले. वाह रे वाह, मैं क्यों हेल्प करूं? शायद मैं भी ये करता उस वक्त. मैं अगर उसकी जगह पर शायद मैं ये करता. आई डोंट नो, एज अ थर्ड पर्सन मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, बट बाय डिफॉल्ट हमको ऐसा, आई डोंट नो, कोई सिखाता भी नहीं है. बट दिस सेल्फिशनेस, आई डोंट नो, अनफॉर्चुनेटली कम्स टू अस नेचुरली. अनसेल्फिशनेस प्रैक्टिस करनी पड़ती है, नहीं तो गली गली में गौतम बुद्धा होता ना. व्हाई दीस पीपल आर सो रेयर. ऑल राइट. तो सी, जब कोई ऑफ साइड पिकनिक रहती है कॉर्पोरेट की, हाँ, गोवा में बीच वॉलीबॉल खेल रहे सब लोग, अचानक भाईचारा बढ़ता है ना. कोई जो एक ही टीम में है, जो दुश्मन भी आप मेरे टीम में है अगर सपोज, तो अरे चलना मारना चलना, क्यों? बिकॉज देयर इज अ कॉमन इंसेंटिव, विक्ट्री, जीतना है. तो सी हाउ कॉमन पॉजिटिव इंसेंटिव सडनली brings people together. So always focus on common incentive. If you are an employee, you are the boss, make this part of your culture. Group incentives, positive, negative, preferably positive, sometimes negative incentives. Right? Reward is always better than punishment. तो अभी आपको क्या लगता है, विराट कोहली और रोहित शर्मा, क्या नेचुरली उनमें भाईचारा है क्या? इतने अच्छे से एक दूसरे को संभाल लेते हैं. नो, लुक एट द इंटरव्यूज, दे गिव क्रेडिट टू ईच अदर. नो, अगर किसी ने रोहित शर्मा ने कुछ बोला नेगेटिव, तो विराट कोहली टेक्स केयर ऑफ इट हिम इन हिज इंटरव्यूज. तो ऐसा क्यों है? क्या स्पेशल बॉन्डिंग है? नहीं, बिकॉज दे नो द कॉमन थिंग इज इंडिया को जिताना है. और दोनों अगर साथ में काम नहीं करेंगे तो दोनों का नुकसान है. तो दे हैव अंडरस्टूड दैट क्रिकेट इज नॉट एन इंडिविजुअल गेम, इट इज अ टीम वर्क. So let's focus on the common good, the common objective, and automatically brotherhood will come. All right. So कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो वगैरह, तो प्रोजेक्ट एज अ टीम इंसेंटिव डिसाइड करो, and everybody will change their approach. Now there is no I first, I'll prove my talent, I'll show I'm the best. ये सब अपने आप चला जाएगा. It's always we. Let us do it. No, let us improve. Let us rectify this. Us and we, ये वर्ड ज्यादा यूज होंगे instead of I and me. All right. Best example is COVID. The whole world came together because there was one common enemy to be dealt with. Yes or no? तब कोई नहीं हिंदू था, कोई मुसलमान नहीं था. Common hardships bring people together. It's not a coincidence कि कोविड जाने के बाद बराबर यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ. It's not a coincidence. जब कॉमन एनिमी चला गया, आपस में एनिमी होने का शुरू हो गया. राइट. हमारे देश में भी वही हुआ. फिर वो कांग्रेस बीजेपी वापस शुरू हो गया. कोविड में कम था और ऑलमोस्ट नहीं था. So see how common objective, common hardship, common incentive bring people together.
Right. The most important thing that I have learned as a leader or as managers is giving a sense of ownership to your employees, to your subordinates. Very, very important. Now, what do I mean by sense of ownership? See, I always talk to people who are working with me, Farid, Pallavi, Sushil, Parth. कि कोई भी काम करोगे ना, don't think that Amrut is there as a backup. Because just because it is my baby, I have started this. होता क्या है कि उनको पता है कि अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो अमृत है या फरीद है, right? So, for example, now Pallavi, we do these sessions. So Pallavi's job is to upload this recording on YouTube after 2-3 days. And तो वो अपलोड किया उसने, और कभी कभी बात क्या होता है, मेरा कनेक्शन चला जाता है, तो वो 2-3 मिनट वेस्ट होते हैं, तो वो भी रिकॉर्ड होता है, राइट? तो आई टोल्ड, तो मैंने वो वीडियो देखा, पल्लवी बीच बीच में वो सब गायब हो रहा है, तो थोड़ा पैच एडिट करने का ना, उसको ट्रिम करने का क्यों नहीं किया? देन आई रियलाइज दैट देयर इज नो सेंस ऑफ ओनरशिप. तो मैंने उसको बोला कि ऐसा वीडियो तुम अपने चैनल पे डालते क्या? देयर आर इंटरप्शंस, जहाँ पे कुछ आवाज चली गई है फिर भी वीडियो चालू है. Said no, I'll not do that. Exactly, that's the whole point. Because you know if there is a backup, there will be Amrut or Farid who will be taking care of. It becomes a chore कि मुझे मुझे क्या बोला है, अपलोड करना है तो अपलोड कर दिया. No, don't take it as a job, take it as a responsibility. फिर तुम एंड तक उसको अंजाम दोगे, स्टार्ट टू एंड तक, एंड इट इज नो मोर अ चोर. एक मेरा दोस्त मेरे साथ रहता था, एंड सो उसको मैंने कुछ, मेरे को अर्जेंट दवाई चाहिए थी जो खत्म होने को आई थी. तो मैंने उसको बोला कि जेनेरिक ड्रग का एक स्टोर है. मैंने उसको नाम और दवाई का नाम और पैसे दिए, एंड बोला कि लेकिन तुम उस साइड जा ही रहे हो तो प्लीज मेरे लिए वो पिल्स लेके आओ. एंड देन इन द इवनिंग ही केम बैक एंड ही सेड, अरे अमृत, द शॉप वाज क्लोज्ड. नाउ सी द डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी. उसको क्या लगा, मुझे वो शॉप पे जाने को बोला था, वो शॉप बंद था तो मेरा काम खत्म हो गया. ही डिड नॉट थिंक कि ये दवाई अमृत को चाहिए. उसने बोला था खत्म होने को आया, शायद उसको रात को दवाई लगेगी, तो लेट मी कॉल हिम if the shop is closed and check is there any other shop where I can go. Now this is sense of ownership. Now it's not a job. या कर्म और क्रिया, उसमें फर्क है. क्रिया इज जस्ट अ जॉब. कर्म या कर्मा मतलब क्या कि उसको एंड तक अंजाम देना. कि अमृत को दवाई चाहिए तो जरूरी नहीं कि ये शॉप नहीं तो कोई दूसरे शॉप पे मिलेगी क्या, लेट मी कॉल हिम. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो क्रिया इज ऑलवेज अ जॉब एंड karma is the responsibility. All right. uh, and so good way to give a sense of ownership is to give lot of autonomy, freedom. So whenever I give a task to anybody, whether it is for you, क्या करना है ये बोलता हूँ, कैसे करना है it's your problem, I'll not interfere. Now by doing this I'm trusting those people that you are intelligent enough, smart enough to figure out how to do, even though I know how to do, because उसमें उनकी ग्रोथ होने वाली है ना. When they make mistakes, the trial and error होगा, they'll come back with a not so great work, then I'll give feedback, अरे ये ऐसा करना है ऐसा करना है. This is how they'll grow. And hence those dispassionate teachers give away ready-made answers to their students is a very bad way of teaching. Good teachers, passionate teachers never give ready-made answers to their children, to the students. They just create an environment where children will come out with good answers और उसमें गलतियां सुधारेंगे वो. Never give away ready-made, ये करना है नो, just and follow my instructions. अभी वो जमाना गया, following the instructions. Okay? Today it is knowledge workers age, जहाँ पे there are no clear boundaries of the job. It's a black and white नहीं है, right? तो let them figure out. In fact उसमें मजा आता है करने को, to explore things, new things. All right.
And so when I talk about sense of ownership, okay, एक और एग्जांपल मुझे याद है, आज ही हुआ ये. सो एक पेन स्टैंड में एक पेन रखा था, तो बहुत सारे पेन रहते हैं ना ऑफिस में. तो मैंने वो पेन लिया और मुझे कुछ कुछ लिखना था डायरी में, आज के नोट्स लिखने थे मेरे डायरी में. और वो पेन नहीं चल रहा था, तो रिफिल खत्म हो गया था. तो आई आस्क्ड सुशील की, अरे फिर खत्म हुआ तो फेंक क्यों नहीं दिया उसको, राइट? अब बाकी के पेन है तो जो खत्म है फेंक दो. तो नहीं नहीं, वो तो अच्छा पेन है ना, तो रिफिल हो सकता है. रिफिल हो सकता है मतलब कौन करने वाला है वो? लैक ऑफ ओनरशिप. बस रख दिया मतलब इट विल बी टेकन केयर ऑफ बाय समबडी, राइट? सी सेंस ऑफ ओनरशिप मतलब क्या? यू हैव सीन दैट हाउस होल्ड लेडी हु टेक्स चार्ज ऑफ द किचन सो मच, उसको लगता है कि दैट इज हर टेरिटरी. या यू नो हर बॉडी लैंग्वेज, her communication, that she takes care of the kitchen as if she owns it. Yeah, अगर black pepper or chini has gone down depleted to 20% in the jar, immediately it becomes part of her tomorrow's shopping list. Everything is so systematic. Yeah, अगर हम interfere करेंगे, ए चुप तू चल, I'll do it. She says that most of it. I mean, I'm talking about full-time homemakers, be it man or woman. I don't want to be biased. That does not mean everything may be perfect in the kitchen. There could be mistakes. No, there could be no, the recipes could turn out to be a blunder. वो ठीक है. I'm talking about the sense of ownership. Things are moving as per her mastery, right? This is what is expected. और वो लीडर का काम है सेंस ऑफ ओनरशिप कैसे क्रिएट करना है. बट द प्रॉब्लम इज लीडर्स पुट सीसीटीवी कैमरास. आजकल ये बहुत फैड हो गया. आजकल सीसीटीवी कैमरा सब जगह पे, सीसीटीवी कैमरा. आई वोंट बी सरप्राइज कि एक दिन वो टॉयलेट में भी लगाएंगे सीसीटीवी कैमरा. वो इलीगल है इसलिए लगाते नहीं ना, तो उधर भी लगाते. नाउ व्हेन आई पुट माई सेल्फ इन दैट पोजिशन, आई वुड नॉट लाइक कि कैमरा चालू है और मेरा बॉस कंटिन्यूसली मुझे वॉच कर रहा है. इवन इफ ही इज नॉट वॉचिंग कंटिन्यूसली, आई ऑलवेज थिंक कि अरे ही इज अ वॉच डॉग एंड कीपिंग एन आई ऑन मी. Why? It's wrong, no? It is also lack of trust. Don't you think when the management is putting a CCTV camera across the premises of the office, you are indirectly saying that we don't trust you and so we are keeping a watch. तुम काम नहीं करते हो, तुम पे निगरानी रखने के लिए CCTV कैमरा रखा है. No, not necessary. I would want Farid to gossip with his colleagues, or I should not know everything what they are talking the whole day, right? Just because employees are being paid for those 8-10 hours, that doesn't mean each and every minute should be given to the enterprise, to the organization. Small talks, gossip, इधर उधर की बातें, अरे तुम्हारी माँ बीमार थी उसका क्या हुआ, is okay, and I don't have to know everything, right? तो CCTV cameras, biometric password at the entry gate, exit gate, log in, log out to check the timing. So time पे log in कर रहा है, काम कर रहा है. I think I will never install these things ever. कितना भी मैं grow करूं. It is exactly opposite of trust. Some might argue कि नहीं नहीं कुछ बेईमान लोग रहते हैं. हाँ होते हैं ना. तो 10 में से 2 रहते हैं, तो why make other 8 people unhappy for those 2? Work on those 2 people, fire them, right? वो 2 लोग अगर बेईमान है, इनसिंसियर है, डिसऑनेस्ट है, why a blanket approach to everybody? That's the main role of the leader, to fire the wrong people and retain the right people, right? To focus on people, keep a watch on the people, and और जो अच्छे लोग हैं उनको रिटेन करने के लिए किसी भी हद तक जाओ, और जो गलत है उनको तुरंत निकाल दो. इज व्हाट आई थिंक शुड बी डन. एंड सो ये जो टाइम दो अगर लेट आएंगे तो पगार कट करना वगैरह, आई थिंक दिस इज अ वेरी बैड आइडिया. नहीं करना चाहिए ये सब. इंस्टेड शो देम द ड्रीम. व्हाई आर यू कमिंग हियर? ये सिर्फ एक्सेल शीट और पावर पॉइंट के लिए तुम नहीं आ रहे हो. दैट शो देम द हायर पर्पस व्हिच आई ऑलवेज टॉक अबाउट.
कि आप काम क्या करते हो इम्पोर्टेंट नहीं है. वेदर यू आर अ मोटिवेशनल स्पीकर, फिटनेस ट्रेनर और सेलिंग फिश ऑनलाइन, डजेंट मैटर. If you show higher purpose to your employees, they will come on time, they will work extra, they will come out with ideas. सब कुछ होगा. या मुझे फरीद को बोलना पड़ता है कि भाई घर जा, लेट हो गया है. या आई थिंक दिस द क्रेडिट गोes to both of us, that as a leader I have installed that dream of making India read in him. The primary objective of a leader is to create his clones. Farid has almost become my clone, a thinner clone. वो बहुत पतला है. Because I get this feedback from people कि अरे वो तेरे जैसे ही बात करता है अभी. And that makes me so happy. Because we discuss so much that he has taken so many things from me. He has absorbed like a sponge from me in last 5-7 years. He has become me. Yeah, he's like a brother from another mother. All right. दूसरी गलती, हाँ ये गलती मैं करता था. मिस्टर नाइस गाय मैनेजर्स, ये समरी में भी लिखा है मैंने. मिस्टर नाइस गाय मैनेजर्स कौन होते हैं पता है? जो दे आर नाइस पीपल. हाँ, दे आर नॉट इल हार्टेड या ऐसे कुछ षड्यंत्र, पॉलिटिशियन, साइकोपैथ, नार्सिसिस्ट, ऐसा नहीं है. अच्छे लोग हैं. एंड ऑलवेज वांट टू हेल्प देयर एम्प्लॉइज, नो टू ग्रो, फॉर देम टू ग्रो. पर एक्चुअली होता क्या मालूम है? इफ यू थिंक व्हेन यू गिव एन एडवाइस टू समबडी, एक्चुअली इट इज नॉट टेकन एन एडवाइस. हमको लगता है हम उसकी हेल्प कर रहे हैं, पर सामने वाला उसको क्रिटिसिज्म ले रहा है. स्पेशली व्हेन you give an advice which is not asked for, and you give an advice, it is never taken as an advice, it is taken as criticism. और हमको गलत फहमी है कि हम उसकी हेल्प कर रहे हैं और ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है. इट्स लाइक एक बूढ़ी औरत को रास्ता क्रॉस करना है, एंड यू बीइंग द मिस्टर नाइस गाय, नो, वो उस रास्ते के एज पे खड़ी है वो, और आप उसका हाथ पकड़ के you help her cross the road, only to realize later on that the lady never wanted to cross the road. ऐसा हो रहा है मैनेजर्स के साथ. They are giving something to the employees which they don't want. All right. So borrowed authority करके एक प्रॉब्लम है जो मैं भी करता था, कि अगर मुझे मेरा आइडिया चाहिए, आई हैव ऑलरेडी मेड अप माई माइंड, ये आइडिया करना है, बट जस्ट टू show that I'm nice, I take views from people, हाँ, तो मैं I'll present that idea, okay. और फिर कोई अगर उसके अगेंस्ट बोलेगा तो I'll use some borrowed authority, like नहीं नहीं, ये फीडबैक आया था रीडर से तो ऐसा ही करना पड़ेगा. एक्चुअली वो झूठ है, रीडर ने कुछ ऐसा बोला नहीं है. आई एम देयर टू नो, जस्ट टू फोर्स द आइडिया ऑन देम. आई यूज अ borrowed authority. और एक बार मैं ऐसा पकड़ा गया था. सो आईटी टीम के साथ मैं बात कर रहा था और मैंने झूठ बोला था कि ये रीडर से फीडबैक आया है तो ये करना है. तो उसने बोला तू झूठ बोल रहा है, ऐसा कोई फीडबैक नहीं आया होगा, कि तू तेरी गंदी आदत है ये. बोला हाँ यू आर राइट, आई एडमिट. एंड सिंस देन आई नॉट डोंट फॉल प्रे टू दिस बोरोड अथॉरिटी सिंड्रोम. एंड दिस मिस्टर नाइस गाय, राइट, इसमें बोला कि ऑफ कोर्स हेल्प करने की जरूरत है, बट आस्क देम कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है. And if they share their problem, only then give them a solution. हाँ, कभी कभी क्या होता है, when I concluded that never give advice unless asked for, पर फिर भी अगर मुझे पता है कि सामने वाला, जैसे आई एम मेंटरिंग मेनी स्टार्टअप्स, वो गलती कर रहा है, मुझे पता है कि ये कॉमन गलती है और इससे नुकसान होने वाला है, बट ही इज नॉट आस्किंग मी, then why should I give advice? But that is troubling me, right? मुझे पता है कि नुकसान होने वाला है. It is tried and tested. It is nothing new. It's a common mistake done by all the startups as a beginner. तो ऐसे मामले में क्या, कैसे फीडबैक देने का? तो I found a solution. Of course, keeping quiet will trouble me, क्योंकि मेरा दोस्त अगर गलती कर रहा है और आगे जाके नुकसान होने वाला है, तो it will affect me emotionally. ऐसे में क्या करने का? Okay, I'll give you with an example. The most common mistake most of the startups make, to focus on new clients, new customers, new app users. You go to any startup, ना जिम डाल रहे हैं तो पूरे लोकेलिटी में जाके सबको मिलेंगे कि हमने जिम शुरू किया है, अब आओ.
ऑलवेज 80% ऑफ द टाइम एंड एफर्ट इज पुट ऑन सोशल मीडिया, कि हमारा ये है, हमारा मॉनसून ऑफर है, कपल ऑफर है, कपल आएगा तो ये डिस्काउंट मिलेगा, फलाना फलाना ढिंका, ये सब चालू रहता है. बट आई नो, आई हैव रेड दिस इन सम 10 बुक्स, रीवर्क, पीटर थिल, कि न्यू कस्टमर्स, न्यू मेंबर्स इज नेवर अ प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज whether that new customer becomes an old customer one day. वो होता नहीं है. रिटेंशन इज अ प्रॉब्लम. इट इज अ हाई एट्रिशन रेट. अभी मेरा जो जिम ट्रेनर है, वो जिम चला रहा है, तो वो क्या कर, पूरा दिन व्हाट्सएप स्टेटस पे वो अपलोड करता रहता है अपने वर्कआउट के वीडियोस. हाँ. और जब वो देख के कोई आता है जिम में मेंबर, तो वो बैच चालू है, वो सिखा रहा है और उसको इग्नोर कर रहा है और व्हाट्सएप पे वीडियो अपलोड कर रहा है टू गेट अ न्यू कस्टमर, न्यू क्लाइंट, एंड इग्नोरिंग द एग्जिस्टिंग क्लाइंट. So when you are focusing on new clients, you are essentially taking away the focus from existing clients. और यही चल रहा है काफी दिनों से. फिर वो व्हाट्सएप का स्टेटस देके वापस कोई नया क्लाइंट आएगा, वो अभी ओल्ड हो गया तो एक्साइटमेंट चला गया, उसको इग्नोर करेगा, ये वापस मुंडी अंदर डाल के नया वीडियो डाल रहा है, फिर ये छोड़ के जाएगा, वापस नया. वन डे ही विल गेट एग्जॉस्टेड. कितना तुम डालोगे ना टाइम एंड एफर्ट टू 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 ब्रिंग न्यू कस्टमर्स. यू शुड पुट फर्स्ट 10, 15, 50 कस्टमर्स के लिए आपको खुद को काम करना है. उसके बाद आइडियली दोस 50 पीपल शुड ब्रिंग अनदर 50 पीपल ना. यू ठीक है, 20% मार्केटिंग पे डालो ना टाइम एंड एफर्ट, आई डोंट से. मैंने तो वो भी नहीं किया. मेरे फर्स्ट 10 पीपल, माई 10 फ्रेंड, जिनको मैंने व्हाट्सएप मैसेज पहला भेजा था जब मुझे आइडिया आया बुकलेट का, आई जस्ट फोकस ऑन दोस 10 पीपल कि कैसी लगी समरी. सबको कॉल किया कि इंग्लिश कैसा था, बहुत हार्ड था या सिंपल था, कुछ मिस्टेक्स थे क्या. फिर उन्होंने मुझे कि अरे ऑडियो का, फिर उसके बाद ऑडियो का आइडिया आया उनके फीडबैक से. आई डिड नॉट टेल देम दैट प्लीज शेयर, प्लीज मेरे बारे में बताओ सबको. आई डिड नॉट टेल देम दैट. आई जस्ट टुक केयर ऑफ देयर डिजायर्स, देयर कंप्लेंट्स इफ एनी. और वो 10 लोग आज उन्होंने 50 लाख लोग लाए. I did not spend a single rupee on marketing or positioning. You people worked for me and got. I'm sure ऐसा एक भी बंदा नहीं है रूम में जिन्होंने हम मेरे बारे में किसी को बताया नहीं है. मदर, फादर, फ्रेंड्स, किसी को तो आपने बताया. Right? I gave you a strong reason to talk about me. Mission make India read. I gave a very high purpose. Right? Social enterprise. This was the reason why you spoke about me. Right? And then I don't feel exhausted now. I don't have to keep on hunting for new people. वो अपने आप आ रहे हैं. It's growing. मैं तो नंबर्स अभी देखना भी छोड़ दिया हूँ. ऐप डाउनलोड्स, फॉलोअर्स इतने बढ़ रहे हैं. Yeah, but the gym guy is struggling. He is working on a problem that doesn't exist. Getting new customers. Every week I see new faces in the gym, but they remain new only. They never become old. That's the problem. Got it? So focus on existing customers, existing clients, existing users, app users, और वो rest will be taken care of by them only. Okay? But this I know the new customers का ना एक dopamine hit होता है, एक excitement होता है. As if वो नया कस्टमर तुमको कुछ 3 टाइम ज्यादा पैसा देने वाला है. ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. राइट. दूसरी बात मैंने सीखी है कि all these things which I told you about group growth, focusing on existing customers, positive incentive, all these things depends on the top management, on the top जो रहता है ना CEO या founder, उसके हाथ में सब रहता है. If he believes ना, तो ही वो नीचे तक आएगा. In fact, I've observed that wherever I have been invited to speak, कॉर्पोरेट, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस, सब जगह पे मेरे को बुलाते हैं. अगर कोई टॉप लेवल पे ही बिलीव्स इन रीडिंग हैबिट बुक्स, ओनली देन आई एम इनवाइटेड. बाकी नीचे कितने भी रीडर उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है. अगर टॉप मैनेजमेंट डजंट बिलीव इन रीडिंग हैबिट, आई एम गुड फॉर नथिंग फॉर देम. और मैं जाता,
मैं तो जाता ही नहीं, फिर मतलब सवाल ही नहीं आता है, मुझे बुलाया नहीं जाता है। तो सी हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि वो टॉप से आना चाहिए, द कल्चरल चेंज। देन next interesting thing which I have started practicing since 1 year, and I think I am proud of this skill, which is quite rare to see, is using humor to give negative feedbacks or to give criticisms. See, negative feedback, criticism is important, or else the other person will not improve. वो जो गलतियां कर रहे हैं उसको बताओगे नहीं आप, तो how will he improve, right? So pinpointing mistakes is important, but then अगर arrogantly चिल्ला के करोगे तो it will affect the relationship. So I started using humor. For that, you have to take a pause when you see a mistake. Pause नहीं लोगे तो the combination will be bad. अब गुस्सा करोगे. I've learned to put a pause. मैं एक दो दिन के बाद फीडबैक देता हूँ. एक बार क्या किया मैंने? So I'll tell you what is the setup of a booklet house. So we sit in a room for work. We have computers and laptops in one room. और हमारा खाना है इस 2 rooms away. There is a dining room 2 rooms away. वहां पे हम खाना खाने जाते हैं दोपहर को for lunch. So I, Fareed, Parth, we all were having lunch. I suddenly asked Parth, is there any technology जहाँ पे you can invent a fan which will throw air like 3-4 for all the 3-4 rooms, not just one room. And he said, नहीं ऐसा तो कोई टेक्नोलॉजी है नहीं. नहीं है ना, तो फिर ऑफिस का पंखा ऑन करके क्यों आए हो? वो ऑफ करना चाहिए ना. एंड ही दे लाफ्ड एंड इमीडिएटली गॉट अप एंड वेंट एंड स्विच्ड ऑफ द फैन. नाउ दिस इज अ फनी वे ऑफ मैसेज भी चला गया, लोग हंसे सब लोग, मुझे भी बुरा नहीं लगा बोलने को. आई डिड नॉट हेजिटेट बिकॉज आई क्रिएटेड अ जोक आउट ऑफ इट, राइट. पहले तो उसको आइडिया ही नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने बस उसकी एक फालतू कहानी बनाई. एंड सिंस देन उसके बाद कभी भी वो पंखा चालू नहीं था. वो टाइम पे बंद होने लगा. सो एज आई सेड, बहुत बार जो एडवाइस देते हैं वो एक्चुअली क्रिटिसिज्म से ऐसे लिया जाता है. ऑनेस्टी, if you lead as an example, being honest is so important. Employees are watching you, noticing all the small things. If an employee wants to meet his boss in the cabin and the secretary says that he's in a meeting when actually he's not in a meeting, right? That is a very dishonest boss. The employee will notice, because honesty is not person centric. मतलब अगर पेस्ट कंट्रोल हुआ मेरे घर पे इन बुकलेट हाउस, बुक्स होता है ना, तो पेस्ट कंट्रोल रेगुलरली करना पड़ता है बिकॉज देयर इज अ फियर ऑफ टर्माइट. एंड व्हेन Farid was besides me and the pest control wala gave me the bill and said that you can pay in cash without GST. And if I say that okay, मुझे GST नहीं भरना है, मैं कैश में भरता हूँ, and Farid is noticing this, what message I am giving to Farid is that if I can cheat my government, I can also cheat Farid one day. Honesty or dishonesty is not person centric. वो इंसान की फितरत है. ऐसा नहीं है कि आई विल बी ऑनेस्ट टू नवनीत बट डिसऑनेस्ट टू वैष्णवी. वो इंसान में फितरत है ऑनेस्टी या डिसऑनेस्टी की. इनफैक्ट देयर इज अ वंडरफुल प्रोविजन इन ऑल द लॉज ऑफ द वर्ल्ड. इट्स एन अनरिटन प्रोविजन कि कटघरे में जो इंसान को खड़ा किया है, अगर उसका एक झूठ पकड़ा जाता है ना, उसके बाकी सब झूठ माने जाएंगे. पर सच के लिए ऐसा नहीं है कि एक सच तो सब कुछ सच. वो झूठ के लिए ऐसा है. एंड दिस लॉ इज एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड. एक झूठ तो सब झूठ. तो दिस इज व्हाट dishonesty. If I'm dishonest to my government, that means I'm dishonest to my friend, I'm dishonest to my family in different facets. Or the other person will perceive me as dishonest, even if I'm honest to him, but I'm dishonest to somebody else. Are you getting my point? Yeah. Uh, so the employees observe all these things. मैंने जो कुछ जो एग्जांपल्स दिए थे. See, leadership, when I talk about leadership, I'm not talking about the organizational position as a leader.
the designation. I'm talking about the mindset as a leader. Okay, a daughter can lead her father by taking a right stand when something goes wrong. All right. For example, uh, a son, उसका फेवरेट क्रिकेट मैच आ रहा है, आईपीएल फाइनल्स है, बट ही सीक्रेटली he hands over the TV remote to his mom and says that नहीं आपको जो सीरियल देखना है देख लो, and he is secretly sacrificing his favorite cricket match. He becomes the leader of the house. You're thinking more about others than self. Leadership is about, for example, a husband has got a promotion and increment, and he's so excited to share his great news with his wife. He comes home only to realize that my wife has gone mad क्योंकि आज वो काम वाली बाई नहीं आई है, and he consciously contains his excitement and postpones the sharing of the good news for a later date and listens to her pain कि अच्छा आज आई नहीं कि तो बहुत प्रॉब्लम हुआ रहेगा ना, उसने इन्फॉर्म भी किया था कि नहीं पहले, and you indulge into her problems, ask questions, and just listen to her with an empathetic ear. He becomes the leader of the house. वरना बैड लीडर क्या करेगा, तो उसमें क्या है, बाई तो नहीं आई ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम कर लो ना, घर पे तो होती हो. वेरी बैड वे. यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट पर्सन फ्रॉम हर पॉइंट ऑफ व्यू, राइट. और अचानक से तुमने, अरे वो छोड़ बाई का, मुझे आज प्रमोशन मिला है. या दिस इज द कॉमन रेस्पॉन्स. या फिर when you are invited in an alcohol party and I take a stand that I insist on orange juice, I become the leader of the party. I did this once. Yeah. One interesting thing happened that when I talk about the stand, clarity of stand, which is a very good quality of a leader. I have a friend, very old friend. I mean, our friendship is like almost 15-year-old now. We're not technical childhood friends, but very, very old friends. And he's gradually stopped inviting me at parties, at picnics, गोवा जा, दोस्तों के साथ गोवा जाना मेरे को इनवाइट ही नहीं करता था, मुझे बुरा लगता था. क्यों, क्या, what has gone wrong? हम इतने अच्छे दोस्त थे. But then I observed his invitations did not stop completely. He's inviting me at family functions. गणपति, सत्यनारायण पूजा, डॉटर्स बर्थडे, जहां पे फैमिली है ना, या कोई स्पिरिचुअल इवेंट है, तो वहां पे आई एम इन्वाइटेड विदाउट फेल. बट बाकी की चीजें हैं जहां पे लिक्विड स्पिरिचुअलिटी है, वहां पे वो मुझे नहीं बुला रहा है. रात को बैठना है, गोवा, गोवा मतलब लिक्विड स्पिरिचुअलिटी. देन आई रियलाइज इट्स माई विक्ट्री that my stand is so clear that he's scared to even pick up my phone when I call and he's drinking. He doesn't even pick up my phone. He's so scared. Don't you think this is great? This is a victory of a leader. कि अमृत को ये सब, he is far away from these things now. तो इसको बुलाने से फायदा नहीं. एक तो वो 9:30 बजे सोता है, तो क्या पार्टी, हमारी पार्टी तो 11 बजे शुरू होती है, तो वो लफड़े में ही पड़ता नहीं है मुझे बुलाने को. बट अदर थिंग्स, he knows I am a fit for his family functions, for his daughter's birthday. Perfect. This is what I wanted, right? This is what I wanted. Unnecessarily मैं गलतफहमी में था. And this is perfect. So this is the clarity of your identity in other people's mind is so important. Yeah, don't bend. Don't try to blend with others. Don't try to adjust. People will adjust. People will adjust. Don't worry about that. Now, I have on zero sugar diet, और मैं सिर्फ महीने के 1 तारीख को कुछ मीठा खाता हूँ. बाकी 29 days 30 days में कुछ खाता नहीं है मीठा, बिल्कुल. नॉट अ सिंगल पार्टिकल ऑफ स्वीट रिफाइंड शुगर goes into my body, except first day of the month. I call it as a cheat day or a celebration day. वहाँ पे मैं कुछ खाता हूँ. I know people, they know that I will not have pastries and all at parties. They change the date of the party. कि नहीं, अमृत ने कहा तो 1 तारीख को रखेंगे हम ये पार्टी.
So see, I never asked for them. I never asked to change the date, but they did wholeheartedly. Fine. एक बार अगेन सिंस ये टॉपिक के बारे में बोल रहा हूँ कि क्लैरिटी ऑफ योर स्टैंड योर आइडेंटिटी. So usually when I'm invited at different talks, especially in other states or cities, and then when I land at the airport and I step out of the airport, तो जिन्होंने जो होस्ट है जो ऑर्गेनाइजर है इवेंट के वो मुझे ग्रीट करने आते हैं ना सब बुके वगैरह लेके इधर ग्रुप ऑफ पीपल सीईओ या द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज और इंस्टीट्यूट बड़े लोग लोग मेरे को ग्रीट करने आते हैं और फिर गाड़ी में लेके जाते हैं. So I think I was flying to Ludhiana or Delhi, I don't remember. And when I landed, I got a call from the host, the organizer, who is the CEO of the corporate. कि अचानक से कुछ प्रॉब्लम हुआ है यहाँ पे. I won't be able to come to receive you. I'm so sorry, but I'm sending my driver. Okay, and a nice car. I said, okay, that's fine. I understand. Don't worry about it. I'll get in touch with the driver. But then he did not send me his number. He forgot. I think he was in a mess or something. Some contingency must have come. He forgot to send me his driver's number. थोड़ा मैं पैनिक हो गया था. So hesitantly I stepped out of the airport. और अचानक से एक आदमी मेरे सामने आया. अमृत देशमुख. Hi, I'm driver of so and so. Please come. तो मैं हैरान. तो यूजुअली क्या होता है जब कोई जान पहचान के दे होल्ड द बोर्ड ना. वो एक एयरपोर्ट के बाहर अमृत देशमुख बुकलेट का लिखा हुआ रहता है तो मैं उसके पास चला जाता हूँ. वैसा भी नहीं था उसके हाथ में बोर्ड नहीं था और उसने बराबर पहचाना. एंड देन ऑन रियलाइज कि ही वाज क्वाइट इलिटरेट. So there was rare chances that he has seen me as on DP or on YouTube. वो इतना पढ़ा लिखा नहीं था. I was wondering कि तो मैंने उसको पूछा कि तुमने मुझे पहचाना कैसे. मतलब साहब मेरे साहब ने बोला है कि एयरपोर्ट से जब बाहर आएगा कोई लड़का जिसके हाथ में बुक रहेगा ना वो हमारा होस्ट है गेस्ट है. तो मैं बोला ये तो रिस्की है और कोई रहे तो दो तीन लोग उनके हाथ में बुक है तो बोले नहीं साहब ने मुझे एक और कंडीशन बोली थी कि वो हाथ में बुक रहेगा और वो फिट रहेगा. वो एकदम फिट लड़का रहेगा. तो ये तो रेयर कॉम्बिनेशन है. बोला अरे बाप रे सी हाउ पीपल आर नोटिसिंग एंड आई इट मेड माय डे. आई वाज सो हैप्पी टू हियर दिस. डोंट यू थिंक दिस इज मार्केटिंग. This is marketing, yeah. I know it's an insult by using the word marketing, but this is what leading by example. Preach नहीं करना है, practice करना है. And then I realized I've never flown on a flight without a book. And then I realized पूरे फ्लाइट में मैं अकेला लड़का रहता हूँ जो बैग में से डब्बा निकाल के खाता है. कोई नहीं खाता है. अभी मैं इतना आई एम सच अ फ्रीक्वेंट फ्लायर बिकॉज आई ट्रैवल सो मच. एयर हॉस्टेस मुझे अभी जानने लगे तो नाम से पुकारते हैं मुझे और उनको पता है ये लड़का कुछ खरीदेगा नहीं. वो अपना डब्बा लेके आया रहेगा उसमें कुछ अंडा भुर्जी और पनीर भुर्जी रहेगा और उसकी खुशबू फ्लाइट में आएगी. तो सी दिस इज हाउ प्रैक्टिसिंग एंड नॉट प्रीचिंग is always important. Living on your character and not just focusing on your personality. Uh, I think I have discussed in length that how human relations are important and small things matter. जो small छोटे छोटे झूठ बोलना मैं 7 बजे आऊंगा और 7:30 बजे पहुंचना. These things matter a lot in the long run. पर आपको पता ही नहीं चलता है कि why people are not trusting me then. Because they can't pinpoint कि ऐसा क्यों हो रहा है. Right. So now I think we can discuss something if you have to discuss. I think I've covered I've covered all the points. Anybody wants to speak up? Hi, Amrut. Am I audible? Yeah, hi. Yeah, Anand. Yeah, yes. Yeah, so these words that whatever you have said is very close to heart, I mean, it should be in our character, okay? Or as you already declared that character mistake is not allowed. But I think that after doing Anand, I think there is some network problem from your side or my side. I don't know because your voice is breaking. Am I audible? Is it audible now? Yeah. Is it audible Yeah. now? Yes, better. Yeah.
yeah, whatever you said is very close to every human being. So my point is that by not doing only listening these points, and it is kind of, I would say, that intellectual entertainment. Then in that case, how to get rid of this? I mean, see, these are very basic things. The very well you have said what is a leader. The leader's job is to take care of people instead of getting results and all that things. The very basic things, character. But how to get rid of this intellectual entertainment to really practice all these things and to live by example? See, again, last time also you asked a similar question. You're always looking at the big picture. You're looking at life and all things. The question itself shows. You have to start from now. That's all. That what are the how less wrong I can be today. Did I exercise today? Whatever your important, you think that they are important things. Yeah. How many times did I cheat? Even it's a small thing. I told my friend that I'll call you in 5 minutes, but I forgot. But for us, it is forgetfulness. For the other person, it is lack of Correct. commitment. It is failing to keep your promise, right? हमको लगता है कि कौन सी बड़ी बात है, फोन नहीं किया तो कौन सा बड़ा पाप किया है. These are the small things. It's the journey is inward. Yeah. Now, so I think working on yourself, your physical fitness, meditation, reading books, watching some good videos on YouTube. We have a choice: the entertainment or learning. For me, there are only two types of content on internet: entertainment and learning. And naturally, we are inclined towards entertainment videos more, right? Dance videos, Varun Dhawan, Bollywood, songs वगैरह. But वो कैसे moderation में रखना है कि even if that is more attractive, how can I watch more TED Talks and watch the authors talk, watch the interviews? Gradually मेरी आदतें चेंज होने लगी. मैं भी पहले बहुत entertainment videos देखता था. But now my most common habit is watching interviews, not just their performances. Yeah, you all have watched Charlie Chaplin, his comedy. Yeah, how many of you have watched his interview? मिस्टर बीन, उसके आपने साइलेंट कॉमेडी देखी है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव वॉच्ड मिस्टर बीन्स इंटरव्यू? वहां से आपको उसका कैरेक्टर पता चलता है कि चार्ली चैपलिन के लाइफ में कितने मिजरीज है. यू कांट इवन इमेजिन कि ये आदमी इतना फनी होके उसके लाइफ में क्या क्या ट्रॉमास थे. देन देन यू आर गेट अ स्लैप ऑन द राइट ऑन योर फेस कि यार परफॉर्मेंस का इसका कुछ लेना देना है ही नहीं है. इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस एडवर्सिटीज ये लोग ने इतना किया. मिस्टर बीन वॉज बुलीड in his childhood days for his funny nose and big eyes. उसी को वीकनेस को उसने एसेट बना दिया. हाउ ही मेक फेसेस एंड ऐसा उसका छोटा सा वो डॉल. नो ही ही इज एन एडल्ट विद अ 4 year old child within him, and he did exactly the opposite of what Charlie Chaplin did. Charlie Chaplin was fast. Mr. Bean does slow comedy. एकदम स्लो जेस्चर्स करके हमको हंसाता है. सो आई थिंक दूसरों के कैरेक्टर पे झांक के देखना विल हेल्प यू अ लॉट. नॉट जस्ट जनरलाइज कि मुझे क्या करना है क्या करना है. जस्ट इमिटेट देम ना. और बहुत बार मेरा ऐसा अनुभव आया है आनंद कि जिनको दूर से मुझे वो बड़े लगते थे, बहुत बड़े लगते थे, पास जाने के बाद पता चला वो बहुत छोटे लोग हैं. और जिनको मैं छोटा समझता था दूर से, उनके पास जाने के बाद चला वास्तव में वो बहुत बड़े हैं. कैरेक्टर पे देखेंगे ना तो बहुत फर्क पड़ता है. वी जस्ट हम बाहर का दिखते हैं हमको, राइट. मैं किसी का नाम नहीं लूंगा बिकॉज दैट विल बी क्वाइट ऑफेंडिंग. सो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट लाइफ इन जनरल, जस्ट अभी क्या मैं आज जल्दी सोने जा सकता हूँ क्या? अभी सेशन होने के बाद, खाना खाने के बाद, इफ ऑन एन एवरेज आई गो टू 11 12, कैन आई गो टू 10:30 एट बेड? ऐसा धीरे 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 करना है. एवरीथिंग फेज आउट करना है. पर वो धीरे धीरे करने में ना एक्साइटमेंट नहीं रहता है. इट इज नॉट इंस्टाग्रामेबल. अगर रोज रोज 8 बजे कोई उठ रहा है और उसने मुझे बोला कि मुझे जल्दी उठना है तो मुझे कुछ बताओ क्या करूं मैं. मैंने उसको बोला कि कल 7:55 को उठना है तुमको, 8 की जगह.
नहीं उससे क्या फर्क पड़ेगा 5 मिनट से। बोला नहीं 7:55 करो, फिर परसों 7:40 करो, फिर उसके बाद 7:35 करो। और ऐसे करके करके तुमको पता ही नहीं चलेगा कि तुम 6 बजे उठोगे। राइट, देयर सर्काडियन रिदम इन आवर बॉडी। अचानक से 8 का 6 करोगे, पूरा दिन पागल हो जाओगे आप, सर दर्द होगा, कुछ अजीब फील होता है ना। धीरे 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 अगर ये रिदम चेंज करेंगे तो बॉडी अडेप्ट करती है एवरीथिंग एट स्मॉल। आज का जो मैंने पोस्ट डाला था, एटॉमिक हैबिट्स, व्हेन आई ऑप्शन द बुक एटॉमिक हैबिट्स, यू मस्ट हैव सीन माय पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। तो मैंने वो दोस्त का जिक्र किया है। वो वही दोस्त है जो मेरे पार्टी में बुलाता नहीं है। एक बार अचानक उसने मुझे फोन किया, अमृत कैन आई गेट 6 पैक्स इन 3 6 months? आई सेड यस, मेहनत करनी पड़ेगी पर यस यू कैन डू। हाँ, फिर वो गायब हो गया। और फिर एज आई टोल्ड यू ही इनवाइटेड मी एट सत्यनारायण पूजा। आई रीच्ड हिज बिल्डिंग। वो नीचे आया मुझे ग्रीट करने। और मैं बोला कि लिफ्ट नहीं लेंगे, हम 3rd फ्लोर पे रहता है ना, तो हम विल टेक द स्टेयरकेस। बोले कह रहे इससे क्या होता है, उससे थोड़े ना 6 पैक्स होता है, तू मुझे तेरा प्रॉपर डाइट दे, तेरा वर्कआउट क्या है, कैलिस्थेनिक्स मुझे सब बता, वीडियोस भेज, फिर मैं करूंगा। ना यू अंडरस्टैंड। तो बस बड़ी बड़ी डोपामाइन हिट होता है ना उससे, वर्कआउट का। ये वीडियो डालने को बहुत अच्छा लगता है इंस्टाग्राम पे, पर सीढ़ियों से चढ़ने में क्या है इंस्टाग्राम। वो थोड़ी ना इंस्टाग्राम में डालेंगे आई टुक द स्टेयरकेस इंस्टेड ऑफ एलिवेटर, कौन देखने वाला है वीडियो। राइट, फास्टिंग। फास्टिंग का मैं चाहकर भी वीडियो नहीं बना सकता, मैं क्या बनाऊं। इफ आई एम नॉट ईटिंग हाउ कैन आई मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट। ब्रीदिंग, हाउ इट विल सो बोरिंग। आई एम डूइंग जस्ट ब्रीदिंग मेडिटेटिंग, आप लोग सो जाओगे। सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आर इनविजिबल। And my New Year theme is this only: focus on the invisible, on the intangible, breathing, meditation, ये सब फ्लेक्सिबिलिटी इनविजिबल है। कि अगर मैं तुरंत यहाँ पे घूमूंगा तो वो जो ईज है, उसे मुझे पता है, आपको नहीं पता है कि मैं कितना फ्लेक्सिबल और कितना नहीं हूँ। ये मेरे बॉडी को पता है। राइट, बट मसल्स, बिग चेस्ट एंड बिग बाइसेप्स आर विजिबल, वो सब दिखाते हैं, बट दोज आर नॉट इम्पोर्टेंट थिंग्स। आई कम टू रियलाइज दिस थिंग, लेट देम कम एज अ बाय प्रोडक्ट। I'll not focus on muscles. I focus on breathing and meditation and fasting. I do intermittent fasting every day. I eat only during 8 hours window. Remaining 16 hours, I don't eat anything. No snacking, no munching, nothing. 2 meals, 8 घंटे में, बाकी 16 घंटा उपवास. And I'm getting some amazing results. My skin has started glowing. So these are the things. Now just work on yourself. Yeah. वो ऐसा होता है एक ऐसा, एक उंगली जब दूसरे की तरफ जाती है तो ऑटोमेटिकली 3 उंगलियां हमारे सामने है। ये जो रेशियो है ना, इज फॉर सम रीजन 1:3। ठीक है, मैंने ट्राई, माना कि दूसरों को उंगली दिखाना गलत है, मैंने ट्राई किया पर मुझसे नहीं हुआ। वी आर नेचुरली वी कैन सी अदर पीपल्स मिस्टेक्स इजीली, और उसमें कुछ गलत नहीं है, आई एक्सेप्टेड दिस। बट नाउ द न्यू लर्निंग इज, द मोमेंट आई सी अ मिस्टेक इन अदर्स, इमीडिएटली टर्न द फोकस ऑन माई सेल्फ एंड चेक कि वो गलती मैं तो नहीं कर रहा हूँ। क्रिटिसाइज करके उधर रुकने का नहीं दूसरे को। एंड दी थिंग्स हैव स्टार्टेड चेंजिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। इफ द मिस्टेक इज कॉमन इन मोस्ट ऑफ देम, तो मैं भी कर रहा हूँ ना, मैं कौन सा ऊपर से टपका हूँ। राइट, सो ऑब्जर्व, फाइंड मिस्टेक्स इन अदर पीपल एंड टर्न द फिंगर्स टुवर्ड्स यू। राइट, कि जैसे मैंने बोला कि पीपल फोकस ऑन न्यू मेंबर्स, न्यू कस्टमर्स एंड इग्नोर द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। मुझसे तो ऐसा हो नहीं रहा है। आई इमीडिएटली चेक, ऐसा नहीं होना चाहिए कि माय फोकस इज ओनली ऑन गेटिंग न्यू रीडर्स। दैट्स इट। Thank you. Thank you. या, अस्मिता वांट्स टू से, अस्मिता। Yes, sir. Thank you, sir, for the wonderful session. Thank सर you. मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने बहुत बार ये एक्सपीरियंस किया है मेरे ऑफिस में भी और जहाँ पे कि कभी भी ना मैनेजर्स या जो भी है वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत पर्सनल रिलेशन बनाते हैं एंड दैट टाइम दे गेट टू अंडरस्टैंड वो एम्प्लॉय का सब पर्सनल सब पता रहता है। सो वो उस पर्सनल इन्फो का मान लो अगर किसी को पता है किसी का फाइनेंशियल मजबूरी है, तो वो पर्सन को वो ज्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे, उसको ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो क्या प्रोफेशनल लाइफ में फ्रेंडशिप क्रिएट करना गलत है क्या, वो रिस्क की वजह से? See, मैंने there is a एक्सपीरियंस risk. किया है सर।
आई गॉट इट, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दिस इज क्वाइट कॉमन दिस डेज. और उसकी वजह से वी डेवलप एन एटीट्यूड वेयर सी ट्रस्टिंग अदर पीपल इज रिस्की, बट नॉट ट्रस्टिंग अदर पीपल इज मोर रिस्की. लेकिन अब क्या एक होता बुक है, पढ़ रहा हूँ. प्रोफेशनल लाइफ में बोल रही हूँ मैं, बाकी जगह ठीक है। प्रोफेशनल में क्या होता है कि हमें जरूरत भी पड़ती है, और डेवलप करते समय बहुत बार मैंने नोटिस किया है, सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेते हैं लोग, नॉट इवन मैनेजर्स, कलीग्स ऑल्सो, और उसी चीज का गलत फायदा बाद में उठाया है। देयर इज नो पॉइंट इन जनरलाइजिंग. अगर किसी एक या दो इंसान ने ऐसे किया है, मतलब सब लोग करेंगे ऐसा नहीं है ना. राइट. राइट। अब कितनी लोगों की पहली शादी एकदम मिजरेबल थी और अभी सुखी जीवन जी रहे दूसरे शादियों में. अगर उन्होंने बोलते कि नहीं, सब मर्द ऐसे ही होते हैं, सब मर्द मेरे पहले पति ने मुझे मारा तो सब पति, ऐसा नहीं है ना. सो राइट। जितने लोग उतने उतने एटीट्यूड्स, उतने विचार. सो लेट्स राइट। नॉट जनरलाइज थिंग्स कि वो वाले बॉस ने मुझे चीट किया, लेकिन हमें मेरा पता सिर्फ नहीं फाइनेंस. होता ना कि ये कैसा निकलेगा सैंपल, हाँ इसलिए एग्जैक्टली इनिशियल फेज, हाँ इनिशियल फेज में क्या हमारा स्टेप्स होना चाहिए, ठीक है, एक हाँ टाइम के बाद ट्रस्ट आएगा ही। करेक्ट. सो आई सेड, दैट्स व्हाट आई सेड, ऑब्जर्व ऑल द स्मॉल थिंग्स. मैंने बोला ना कि फितरत इंसान की झूठ बोलना या नहीं बोलना इज नॉट पर्सन सेंट्रिक. इफ यू आर एट अ कॉफी वेंडर मशीन एंड द बॉस इज टॉकिंग ऑन द फोन, ओके, एंड इज टॉकिंग टू हिज वाइफ कि अरे हाँ हाँ डार्लिंग मैं तो निकल गया हूँ ऑफिस से, अभी पहुंच रहा हूँ मैं बस, एंड इज एक्चुअली इन द ऑफिस विथ यू एट द कॉफी वेंडर, you take it कि this is not a trustworthy person. If he can lie to his wife, he can also lie to me. So राइट। ये ऑब्जर्वेशन इतना स्ट्रांग करना है हमको. आई थिंक ओवर पीरियड टाइम आई हैव बिकम सच एन अमेजिंग ऑब्जर्वर. लोगों को जो दिखता नहीं वो मुझे दिखता है, एंड इमीडिएटली आई कैन ड्रॉ कंक्लूजन्स एंड नो ड्रॉ जजमेंट कि अभी ये लॉन्ग टर्म में इंसान को मेरे लाइफ में रखना है या नहीं रखना है. सर, और मैंने मुझे. एक, हाँ, और एक चीज ये नोटिस किया है, जैसे आपने बोला कि हमें दूसरे के मिस्टेक्स ओन करने चाहिए, या तो फिर वी शुड फॉरगिव देम, या हम्म, तो मैंने एक नोटिस किया है सर, मोस्ट ऑफ द केसेस ये सिनेरियो वर्क करता है, बट कुछ ऐसे एक सिनेरियो है जहाँ पे पीपल आर नॉट रेडी टू चेंज एट ऑल, मतलब प्यार से बात करके देखो, अगर उनको डांट के देखो, सारे साम दाम दंड सारे उपाय करके देखो, दे आर नॉट रेडी, मतलब उसकी वजह से काम पे भी इम्पैक्ट आता है, काम तो उनसे करवाना होता है, एंड इट रियली क्रिएट्स कि अब क्या करें इसका, कुछ भी करके देखो नहीं सुधर रहे, तो ऐसे हम्म. केस में क्या स्टेप उठाना चाहिए? सो आपकी शादी हुई है? नो सर, हाँ. आई तो स्टे विथ फर्ज रूममेट्स करो. एंड आई एम फेसिंग दैट, कि मैं उनको कुछ भी बोलूं साफ सफाई रखने के लिए, दे आर, कुछ भी हो सुनेंगे नहीं बिल्कुल भी, सो आई एम फेसिंग दैट सिंसियरली। तो फर्ज करो अभी, फर्ज करो कि आपकी शादी हो और आपका कोई बच्चा है और वो ये करेगा, आपको सुनेगा ही नहीं. तो व्हाट इज इन योर कंट्रोल टू कीप चेंजिंग योर कम्युनिकेशन, कीप चेंजिंग योर वे ऑफ नो गेटिंग थिंग्स डन, कीप एक्सपेरिमेंटिंग. बहुत बार हमारा कम्युनिकेशन गलत रहता है. फॉर एग्जाम्पल, यूजुअली पेरेंट्स क्या बोलते हैं, मुझे पिताजी बोलते थे हमेशा बचपन में, डोंट सिट ऑन द सोफा एंड ईट. सोफा पे बैठ के खाने का नहीं. और पता नहीं मैं हमेशा सोफा पे बैठता था. एज ए चाइल्ड आई नेवर अंडरस्टूड एंड ही नेवर अंडरस्टूड कि ये समझता क्यों नहीं है सोफा पे बैठ के नहीं खाना है. नाउ व्हाट हैपेंस इज, दिस इज एन एग्जांपल, ओके, हाउ रॉन्ग कम्युनिकेशन doesn't get things done what you want. Now our human mind can't comprehend negative image. करेक्ट। नेगेटिव इमेज ऐसा कुछ नहीं होता है. डोंट सिट ऑन सोफा टू ईट, मतलब क्या? इमेज क्या क्रिएट हुआ? आई एम सिटिंग ऑन द सोफा एंड ईटिंग. राइट। राइट। डोंट गो टू द टेरेस टू प्ले. इमेज क्या क्रिएट हुआ? टेरेस पे खेल रहा हूं मैं. राइट। बट एक्चुअली उनको क्या बोलना चाहिए था? यूज द डाइनिंग टेबल टू ईट. राइट। अभी मेरा पिक्चर क्या क्रिएट हुआ? डाइनिंग टेबल और मैं वहां पे खा रहा हूँ. राइट। अभी बेबी उनको ये पता नहीं था, मैंने बुक में पढ़ा है ये. उस वक्त अगर पता होता तो मैं बोलता कि ऐसा नहीं बोलना ऐसा बोलना है, बट मैं भी बच्चा था. So see, our image can't comprehend the negative, our mind can't comprehend the negative image. I'll give a simple example, Asmita. Everybody, close your eyes. Okay, close your eyes. Don't think of an elephant. Don't think of an elephant. Don't think of an elephant. क्या हुआ? अभी समझा आपको?
So this राइट। is, communication. Keep experimenting. Don't quit. As if सर अगर in अभी case of your मुझे children. अगर उनको बोलना है तो स्मोकिंग ड्रिंकिंग करते हैं और मुझे उससे मुझे स्मोक से भी एलर्जी का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आई यूज्ड टू से कि रूम में मत करो। सो हाउ कैन आई से मेक देम अवॉइड दैट डूइंग, एटलीस्ट रूम में मुझे इम्पैक्ट होता है स्टेइंग टुगेदर। नहीं, मैं तो एक स्टेप आगे जाता। मैं उनको सब बुकलेट सुनाता जो ये गंदी आदतें सब छुड़ाने करके के लिए। देख लिया सर, सुधर रहे, ज्ञान दे रहे बोल के हम ही को सुना रहे हो। मतलब दैट्स व्हाई आई थॉट लाइक इट लाइक Thank you. ह्यूमन माइंड चेंज करने के लिए कुछ और ट्रिगर्स हम दबा सकते हैं क्या किसी का, सो दैट दे चेंज। नहीं, one thing is, if you, it is under control, keep trying to change your environment. If it is not possible, you have tried a lot, change the environment. टॉक्सिक राइट। एनवायरनमेंट, ये मैंने बहुत लोगों को बोला है कि जहाँ पे घर पे टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, अब्यूसिव पेरेंट्स, दे हैव लेफ्ट देयर हाउस ऑन माय एडवाइस, एंड देन नाउ पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ दैट दोस चिल्ड्रन अप टू वन पॉइंट। सो ये हमेशा के लिए टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहना अच्छा नहीं है, बट अगर देयर इज अ फाइन लाइन, ओके, ऐसा नहीं है कि अपनी घर छोड़ देना है या रूम छोड़ देना है, ओके। इफ थिंग्स आर आउट ऑफ कंट्रोल, यू हैव ट्राइड अ लॉट एंड नाउ द एनवायरनमेंट इज रियली टॉक्सिक, then better think of changing the environment. हमेशा वो भी पॉसिबल नहीं होता है, आई नो, या ओके, बिकॉज बट रेंट अगेन इट एंड इज ऑल केस टू अभी केस, या रूममेट्स के साथ शेयरिंग में रेंट होता है, राइट, सो या बजट इश्यूज भी आते see, everything is case to case. We all are learners, हैं। just keep reading books and you will find your own solutions. यहाँ पे मैं, I can't give you specific solutions. I'm not a guru or a life coach. At the most I can give you my examples, and through those examples and the knowledge of books, we have to find our own solutions. या सर, थैंक यू वेरी मच। Welcome.